Hi my lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. First of all, before starting with the video, please ignore my hair today because आज ही hair wash किया है and heat styling / heat tools are a big no-no for me. I do it but very rare, you know. So yeah, this is the natural hair texture and my hair is not behaving well today, but it's okay. So yeah, just ignore that. And today's video is going to be buying and trying Bollywood celebrities' favorite beauty products. Now मैंने इस वीडियो के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स देखे गूगल पे, काफी सारे यूट्यूब वीडियोस देखी, व्हाट्स इन माय बैग देखा सेलिब्रिटीज का जो होता है, एंड काफी सारे रिसर्च करने के बाद ही मैंने ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिए हैं Amazon से. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होती है ना, बहुत एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स / स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करती है, लाइक कील्स, नार्स और मतलब लैंडकॉम, ऐसे ऐसे ब्रांड जो मतलब इंडिया में भी ना अवेलेबल नहीं है. बट मैंने काफी रिसर्च के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ निकाले हैं जो कि थोड़े से अफोर्डेबल है फॉर मी एंड काफी इजिली अवेलेबल भी है इंडिया में. तो मैं Amazon से ब्यूटी एंड फैशन शॉपिंग अपनी करती ही रहती हूँ बिकॉज आई गेट सम रियली नाइस डील्स. एंड वैसे भी गाइज मैं अभी एक फैशन विंटर वेयर हॉल भी अपलोड करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट बिकॉज Amazon इज कमिंग अप विद देयर मेगा फैशन सेल फ्रॉम 26th of November till 28th of November. सो विंटर हॉल भी जल्दी आ रहा है, बट आज के लिए हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं जो हमारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को काफी पसंद है. एंड आई हैव सम 8 to 9 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स हियर विद मी. आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर एवरीथिंग with you guys. So yes, without any further ado, let's just get started with today's video. Now first things first, this video is in collaboration with Amazon, and now let's start off with Deepika Padukone, who's actually one of my favorite actress. She basically loves Neutrogena sunscreen and also this Neutrogena lip balm. Let me just talk about the Neutrogena sunblock first. So this is the ultra sheer dry touch sunblock with SPF 50+. मुझे जब पता चला था that Deepika loves this one, I was like wow, even I love this sunscreen because it is actually very lightweight. It does not leave any white cast on the skin. Plus it's non-oily, non-greasy. मतलब बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है that you are wearing एक अलग सा sunscreen on your face. You know that greasy feeling जब आप कुछ ऐसे sunscreens लगाते हो. So it's not the case with this one, and this is what it looks like. Once you blend it properly into your skin, it's not gonna leave any like weird white cast. Just look at that. So I really like this sunscreen. Plus it is SPF 50, so that's great. The next product that she likes to use is the Neutrogena lip balm with SPF 15. This is what the outer packaging looks like. मैंने संभाल के रखी थी इस वीडियो में दिखाने के लिए. And this is the lip balm. It's the outer packaging of this, and it's a clear lip balm without any tint. It is actually great to wear during the daytime when you have to step out in the sun. और आपको जब कोई लिपस्टिक वगैरह लगाने का मन ना हो, simply apply this because इसमें SPF 15 है, and the article actually says that she likes to keep her lips hydrated with the Neutrogena lip balm with SPF. It prevents her lips from drying and getting chapped. ये आर्टिकल मुझको मिला था Popexo की वेबसाइट पे, which is why I got my hands on this lip balm. Now talking about the hydrating aspect, I feel this is really hydrating. मतलब मुझको literally मैं बोलूँ at least 9 to 10 hours तक मुझे फिर से एक lip balm लगाने की नीड नहीं हुई अपने lips पे, even in this sort of a weather. Honestly speaking, I love the formulation. It is lightweight. It's like a clear lip balm जिसका एक काम है just आपके lips को protect करना from sun rays and also to hydrate, to moisturize your lips basically. And I think the lip balm does that. Plus it's very affordable as well, guys. I really like this lip balm. Would highly recommend. Now let's move on to Sara Ali Khan's favorite makeup product. So in a Google article, she says that my favorite beauty product has always been and will always be the Colossal Mascara by Maybelline New York. It is super volumizing, super sexy, super fun and nice. So article में ये लिखा हुआ था, guys, which is why I got my hands on the Maybelline Colossal Mascara and I got the waterproof version. So this is like a 2x volume mascara, lasts up to 12 hours, instantly volumizes the lashes. So this is what it looks like, guys, and I remember using this so much back in I think 2016-17. I don't clearly remember, but this is one of the mascaras that I purchased when I was just starting off with my makeup journey, you can say. So ये वाला mascara मैंने पहले use किया हुआ है, and in fact मैंने अपने eyes पे वही लगाया हुआ है. So on one side, on my right eye, I'm actually wearing my Flower Beauty mascara, and on my left eyes, I'm just wearing 2 coats of this Maybelline Colossal waterproof mascara. And can you guys notice any difference? Like मेरे left eye पे भी उतनी ही amount की volume है, lengthening effect है जितना मेरा right eye पे है. And this mascara is for 800, whereas this mascara is for I think half the price if I'm not wrong. So I would highly recommend you guys to check out this mascara. It's super volumizing, I must say, and I have to agree with Sara because you know the formulation of the mascara is actually really nice. Plus it is super inexpensive as well. Plus I was shocked to know that Sara actually loves a drugstore mascara so much. मतलब
मुझे लगता था कि बस सेलिब्रिटीज नार्स से नीचे प्रोडक्ट्स को, नार्स से नीचे वाली ब्रांड्स को देखते तक नहीं है, बट ड्यूरिंग माई रिसर्च आई गॉट टू नो कि कुछ कुछ सेलिब्रिटीज हैं ऐसे जिनको ड्रग स्टोर ब्रांड्स में से कुछ ना कुछ पसंद है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेलिब्रिटी. सो आई गॉट अ प्रोडक्ट विच एक्चुअली सोनम कपूर loves. So she loves using bio oil and she loves to use it as a moisturizer as it is rich in various essential oils and vitamins. So I got the bio skincare oil. It is the 60 ml packaging and I'll just show you what it looks like. Not gonna lie, I just used it I think twice or thrice if I'm not wrong. Just मेरे को टेक्सचर वगैरह टेस्ट करना था कि फेस पे कैसा लगता है, बिकॉज शी लाइक्स टू यूज इट एज अ मॉइस्चराइजर एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. इसको मैंने 2-3 दिन अपने फेस पे रात के टाइम लगा के देखा एज अ मॉइस्चराइजर एंड लेट मी से दैट दिस इज अ रियली नाइस ऑयल. थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है इसका फ्रेग्रेंस एज पर माई लाइकिंग, बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द ऑयल इट इज एक्चुअली रियली लाइट वेट. इट डज नॉट मेक माई स्किन वेरी ऑयली और ग्रीजी एंड बिल्कुल भी ऐसा हैवी वाला फीलिंग नहीं आता स्किन पे लगाने में. Now I have heard such great reviews about this bio oil because mainly people use it to reduce their stretch marks and all. However, I haven't thought of using this bio oil to reduce my stretch marks, although I have stretch marks on my thighs. So इसको just मैंने अपने skin पे as a moisturizer लगा के ही test किया and I think it is quite hydrating. I've seen so many people talking such good things कि ये acne marks and scars को भी काफी हद तक reduce कर देता है. I think 2-3 years ago I saw my brother using this same 60 ml bottle ली थी उसने हाफ खत्म कर दी थी to treat his acne marks and scars and it actually eventually worked for him. So that's what I can tell you from my brother's experience. However, अभी तक मैंने इसको अपने scars या stretch marks reduce करने के लिए use नहीं किया है. If I have to recommend you guys, I would definitely recommend you to use this as a facial oil in winter season. But oily skin वाले लोगों के लिए I don't think कि उतना सही रहेगा because it's not extremely lightweight and it's not extremely thick also. It's somewhere in the middle. So if you have normal skin, normal to dry, very very dry skin, definitely give this one a try. अगर आप ये पहले से ही ट्राई कर चुके हो तो भी मुझको जरूर बताना कि आपके लिए कैसा वर्क किया. And also Priyanka Chopra loves to use this. So she basically said that bio oil is a magical product. I can't believe I'm sharing this with the world. It's great for blemish free skin if you're also dry. I use it on my entire body at night. Just please don't use it if you have oily skin. Let's move on to the next celebrity who is Kareena Kapoor Khan. So in an article I got to know that she likes to use the Cetaphil moisturizing lotion. Kareena likes to keep things in her vanity uncluttered. Her secret for soft supple skin ? The Cetaphil moisturizing lotion. The basic moisturizer has effective minimal ingredients that work even with the most sensitive skin. I thought कि why not to try this Cetaphil moisturizing lotion because again I've heard such great things about this lotion as well. Now it's for face and body and it's for all skin types. However, I feel कि oily skin वाले लोगों के लिए हल्का सा heavy हो सकता है. मतलब इसकी consistency तो उतनी ज़्यादा thick and heavy नहीं है. But when you apply this on the skin, I think oily skin वाले लोगों को थोड़ा heavy लगेगा अपने skin पे. However, if you have normal skin, normal to dry combination, very very dry, you're gonna love this one. So this is what it looks like and when I blend it, it just gets absorbed into the skin quickly and ये इतना ज़्यादा hydrating effect देता है skin को. I can't even tell you. It actually has a very mild fragrance, like बहुत हल्की सी इसमें fragrance है. Plus ये skin को बिल्कुल भी greasy वगैरह नहीं बना देता है. But let me tell you guys that it is very hydrating, very moisturizing. So winters के लिए I think it would be perfect. So yeah, you can definitely check this one out. Next up we have Alia Bhatt's favorite products. I'm sure you must have seen her in a lot of Maybelline ads and most of her favorite makeup products are from Maybelline. She particularly is a big fan of the Maybelline gel liner and their color sensational lip gradation. So lip gradation lipsticks guys I think कि अब discontinue हो चुके हैं. उसकी जगह उनके Superstay matte ink crayons आ गए हैं. I'm actually wearing that on my lips today in the shade Enjoy the View. So I actually got the Maybelline gel liner. Plus she really likes to use MAC का Fix Plus. I actually saw her using the MAC Fix Plus in her skincare routine which she uploaded on her YouTube channel. I got the Maybelline gel liner, lasting drama gel liner. Honestly मैं इतना nostalgic feel कर रही थी ना when I was placing an order for this because this is the first eyeliner which I bought with my own pocket money. I think like 6-7 years ago. I don't even remember. So this is what it looks like guys and it comes with a brush. Now this is hands down one of the best gel liners available in the market. It is jet black. मतलब मुझको literally ये लगाना इतना अच्छा लगता था ना. Just one stroke glides on like a मक्खन. I am not even exaggerating. ये मेरे लिए हमेशा से multi-purpose product होता था because इसको मैं काजल की तरह लगा लेती थी. बिल्कुल भी smudge नहीं होता था. Plus इसको मैं अपना eyeliner की तरह तो लगाती ही थी. This is something which
which I would highly 110% recommend you guys, because you know the formulation is still the same. Like I can literally, when I was watching it, I could literally feel it कि मतलब पहले भी ऐसा ही था same ये. Now let's move on to our next celebrity, who's Malaika Arora. And एक article में मैंने ये पढ़ा था that the super fit diva often steals the show with her beautiful curly hair, but she never lets anything damage the hair. She absolutely loves using Toni and Guy heat protection mist to protect the hair from heat damage, and because it's her favorite heat protection mist, so that's why I got the Toni and Guy's heat protection mist. Now this one protects the hair up to 230 degrees Celsius, which is great. Now it's something which I have again used in the past and I absolutely loved using this. It's a great heat protection mist. Would highly recommend you this one as well. इसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, बट ऑब्वियसली इसको मैंने काफी टाइम पहले यूज किया हुआ है, पूरा मैंने बॉटल खत्म कर दिया था वो वाला, एंड अभी मैं एक्चुअली यूज कर रही हूँ अपना ट्रेजमे वाला हीट प्रोटेक्शन. दैट इज ऑल्सो ग्रेट. लेट्स मूव ऑन टू अनदर मॉइस्चराइजर which actually Jacqueline Fernandez likes. So in an article it's written that this former Miss Universe has beautiful skin and she takes care of it with the Body Shop Vitamin E Intense Moisture Cream. It provides the skin with a great dose of moisture and makes the skin soft, supple and happy. I believe Jacqueline Fernandez was the brand ambassador for Body Shop. अभी भी है या नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, बट आर्टिकल में लिखा था that she likes to use this one, so that's why I got the Body Shop Vitamin E Moisture Cream. Now this is for all skin types and इसको मैंने इतना ज्यादा यूज किया है ना. Again this is something which I have used in the past and I truly enjoyed it. Like I think मैंने विंटर्स के टाइम ही लिया था उस टाइम भी, एंड मुझको बहुत ही सही लगा था ये वाला विटामिन ई का मॉइस्चर क्रीम, बट मैंने रिपर्चेज नहीं किया था बिकॉज दैट वाज आउट ऑफ माय बजट. दैट टाइम आई वाज नॉट अर्निंग दैट वेल एंड जस्ट मेरी जॉब लगी थी उस टाइम न्यू, तो कभी थोड़ा ऐसे बजट ऊपर नीचे हो जाता था, इसलिए आई कुडंट रिपर्चेज दिस. बट आई एम सो ग्लैड कि इस वीडियो की वजह से मैंने दोबारा ये वाला मॉइस्चर क्रीम लिया, एंड दिस इज सो गुड गाइज. लाइक दिस इज ट्रूली हाइड्रेटिंग एंड आई हैव यूज्ड सो मच ऑफ दिस. आई एम नॉट श्योर इफ इट्स विजिबल ऑन द कैमरा, बट मैंने काफी ज्यादा इसको यूज कर लिया है एंड आई एब्सोल्युटली लव द टेक्सचर. नाउ दिस इज समथिंग विच इज so hydrating, so nourishing, plus it has a really nice fragrance as well. The fragrance can be a little strong for some people out there, but I personally don't mind. So yeah, this is what the texture looks like. So you just really have to blend it properly into your skin, and trust me, इसको मैं रात में लगा के सो रही हूँ आजकल, and जब मैं सुबह उठती हूँ ना guys, trust me, इतना ज्यादा skin hydrated, soft and supple skin लगती है मुझको, plus हल्का फुल्का like मुझे glow भी दिखता है. That's something again would highly recommend you guys for all skin types है ये, but I feel कि oily skin वालों के लिए again it can be little heavy. Wouldn't recommend for oily skin people, but if you have normal to combination to dry skin, go for this one. You're gonna love this, especially in the winter season. It just hydrates the skin so beautifully. Alright, let's move on to our second last celebrity favorite product, and this is by Shraddha Kapoor. So एक article में लिखा है that the My Glam Treat Love Care Anti-Pollution Foundation is a fabulous solution for everyday makeup in the city. So first of all, she likes the anti-pollution foundation. वो मैंने नहीं लिया because online कभी कभी ना फाउंडेशन का शेड गलत आ जाता है, एंड साथ में ये भी लिखा है that I recently tried the My Glam Superfoods Kajal and I instantly loved it. It has everything you want in your everyday kajal, but what I really liked about it is that it is enriched with avocado oil, which is extremely nourishing. So that's why I got the My Glam Superfoods Kajal, and ये मैंने अभी तक ओपन करके भी नहीं देखा है. It says that it lasts all day. It is smudge proof, it's waterproof. So we have the kajal over here and it comes in a retractable packaging like this. अभी एक स्ट्रोक टेस्ट करते हैं कि कैसा काजल है, लाइक कैसा फॉर्मुलेशन है इसका. ओके, दैट वाज स्मूथ, बट इट इज लाइक एक स्ट्रोक में इट इज नॉट दैट जेट ब्लैक, या फिर शायद मैंने इसमें मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है. मैं अपने दूसरे हैंड पे भी ट्राई करके देखती हूँ. ओके, एक्चुअली दिस इज जेट ब्लैक गाइज. इस पे मैंने 2-3 ऐसे मॉइस्चराइजर लगाए थे ना, तो ठीक से वो पिगमेंटेशन पता नहीं चली, बट जस्ट लुक एट दैट वन स्ट्रोक एंड इट इज हाईली पिगमेंटेड जेट ब्लैक काजल. एंड इसको एक बार सेटल डाउन होने देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि ये स्मज प्रूफ है या नहीं. सो लेट्स स्मज इट. ओके, दिस इज नॉट गेटिंग स्मज्ड. ये बहुत अच्छे से सेटल हो गया यार. वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड. बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं. एंड वाटरप्रूफ टेस्ट भी कर लेते हैं यार, मुझे प्यास भी लगी है तो मैं पानी भी पी लेती हूँ और वाटरप्रूफ टेस्ट भी कर लेते हैं. पोरिंग सम वाटर ऑन द काजल. ओके, दिस इज
waterproof as well, guys. Let me just try smudging it. पानी डालने के बाद भी smudge नहीं हो रहा है. I am highly impressed with the kajal. Definitely a big thumbs up from my side. And now we have come to the last celebrity favorite product. This is by Priyanka Chopra. एक आर्टिकल में ये mentioned है कि किसी इंटरव्यू में she told कि nothing keeps my lips as soft and plump like Bird Bees lip balm. Plus, I love the hint of color that it gives to my lips. I think she was talking about the pomegranate variant. इस वेबसाइट पे भी उसी का फोटो लगा हुआ है, बट मुझे वो Amazon पे नहीं मिला, which is why I got the Bird Bees beeswax lip balm in the variant vitamin E and peppermint. ये भी एक एकदम clear lip balm है, इसमें कोई hint of color नहीं है because obviously it's a different variant. As when I apply this, it smells so refreshing. एक proper वो peppermint वाला इसमें से fragrance आ रहा है. Plus when you apply it on your lips, ट्रस्ट मी गाइज, इतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है ये लिप्स को. बहुत लाइक ठंडा ठंडा लगता है लिप्स पे. प्लस इट इज क्वाइट नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एज वेल. बट मुझको Amazon पे अराउंड 600 रुपीज का पड़ा गाइज, विच आई फील इट्स डेफिनेटली एक्सपेंसिव फॉर अ लिप बाम. नाउ इफ आई हैव टू रेकमेंड यू गाइज के दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, just go for this one. It I think does the same job. मतलब उतना ही ज्यादा मुझको ये nourishing and moisturizing लगा as the Bird Bees one. And yeah, I mean दोनों ही clear, एकदम clear वाली lip balms हैं. But अगर price point के हिसाब से बात करूँ, ये वाला मैं recommend करूँगी instead of this one. However, if you are looking for a peppermint based lip balm, like कुछ लोगों को ना face पे and lips पे बहुत अच्छा लगता है cooling effect, you can definitely go for this one guys. कोई टेंट नहीं है, but absolutely love the refreshing cooling effect that it gives. And that's pretty much it for this video guys. I really hope you found the concept interesting. Trust me, I read so many articles, watched so many YouTube videos ताकि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं. So if you want to appreciate my efforts, please make sure you give this video a big thumbs up. And if you also want to try these Bollywood celebrities favorite beauty products, तो मैं ये सारे ही products के links नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके लिए मेंशन कर दूंगी. मेक श्योर यू चेक इट आउट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. In case you guys would like to connect with me on my social medias, I'm going to leave all the links for you in the description box below as always. I'm going to see you next time. Till then, you all please stay safe, stay positive and be kind to yourself and others. Bye bye.